morning, everybody. Good morning. Welcome to wonderful session by Spiritual Doctors for Holistic Health. Myself, Dr. Sandeep Jot, and with me is Dr. Saurav Ranjan. We both have started this session so that we can come to know different things which exist in spite of medicines also. When I was in medical college, there was only two things, medicines and surgery. But as we have read so many books and so many researches, mainly this revolution came after 1980. It started in USA, but in India we know these things from beginning because of Ayurveda. But because of Dr. Dean Ornish, which has started his research, and he started with this reversing of heart disease. Heart disease. Yes. And from 1990s, India's own Dr. Dean Ornish, Dr. Khadrabali, is telling us about the 5 millets and their benefit. Friends, when I have done the research, I have come to know, and I felt like what Indian Institute of Millet Research is doing, Dr. Khadrabali is doing more than that. He has lakhs and lakhs of his followers. He has treated so many patients, be it cancer, be it thyroid, be it hypertension, be it diabetes, and without any side effects. Actually, Dr. Khadrabali has researched on nearly 100 millets, and he come up with the 5 wonderful millets, to which he called positive millets. These 5 millets are foxtail, kodo, little millets, barnyard, and brown top. We will listen from Dr. Khadrabali that how these millets are wonderful and magical, and how his journey started. But before that, I will share my personal experience in medical college, how our diet was. And still my younger cousin is studying in medical college, and what is the mentality of doctors. Being a doctor, I'm not critical of anything, but we are away from health. We're treating the patients, but we're not giving them health. What was my diet when I was in medical college? My diet was, in the morning, I was having paratha, stir fried. In the afternoon, there was some dal, sabji, whatever. There was no time for the lunch. And at that time, I did not felt anything. That's because body was getting immune to all the things, whatever was coming, I was putting in my body. But with time, I came to know when myself, I suffer from diabetes. I know what is the side effect of metformin and drugs. They're just treating the symptoms. They're not treating the disease which is underlying. I will be very frank. That's why we have started this channel. So we can openly discuss in the doctors community that these things exist. And in many researches in India and USA, it has been found the cancer patient are not advised to change their diet, because only with the diet, the cancer can be reversed. But in medical science, there are only 2-3 things: radiotherapy, then medicines, or in the last surgery. Yes, friends, our many diseases are just because of our food, and with the food also we can treat them. This is an old known knowledge which has come to us through Dr. Khadrabali and many other doctors. Today we will discuss so many things about food, how food should be eaten, what not to eat, what to eat, because it's must that we doctors must know that these things exist and how many studies are there. Lakhs and lakhs people are cured without medicine forever. Now I'm coming to my younger cousin's hostel. In his college, there is McD, there is Bresta, there is Burger King, and Domino's also. That there is nothing about health you can see around him. And right now, after so many years, we have realized that our medical studies is also sponsored and by the pharma industry, and they decide that what doctors should read and what doctors should prescribe. Friends, it's an open time that we can know from our guest speaker, Dr. Khadrabali. And I want to tell a few things about Dr. Khadrabali, other
things Dr. Saurav will highlight, that I have listened about Dr. Khadrwali from a doctor. He is a preventive medicine doctor, Dr. Gagan. He is an assistant professor in Government Medical College, Patiala. He told me that, brother, you got diabetes, just watch this video. After watching that video, I used 5 millets, and Dr. Khadrwali, I cured myself without any medicine. Thank you very much. And today we are very humbled that I am sitting in front of, I have no problem to say that front of the God who has given the millet knowledge to whole world. Dr. Khadrwali has a deep knowledge about millets and food habits. He is motivating farmers also to cultivate his seeds. He just came back from USA to serve his countrymen near about 30 years back, along with his wife. He's a PhD doctor. He could easily stay there, earn the money, but now presently he has developed a small jungle in his village, and he is serving his native persons and educating whole world. Dr. Khadrwali says that food is a medicine, and with the food we can treat various diseases like diabetes, hypertension, obesity, constipation, piles, gangrene, be a psychiatric diseases, kidney diseases, low sperm count, skin diseases, depression, whatever. Food is a medicine. Without wasting any time, I will request Dr. Saurav to say a few words about Dr. Khadrwali. डॉक्टर खादरवली जो है, उनके बारे में ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर इनके वीडियोस, टेस्टिमोनियल, ब्लॉग भरे पड़े हैं। आंध्र प्रदेश के हैं, मूलतः कडापा डिस्ट्रिक्ट के, और मैंने अपने कडापा मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से हूं सर, और आप 2018 में ध्यान महाचक्रम में हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं। मैं उस साल वहां पे नहीं आया था, लेकिन इंटरनेट से हम देखते हैं, तो मैं आपको पहले से भी जानता हूं। बस मैं बिहार का हूं, दिल्ली में रहता हूं, तो मैं हिंदी भाषी ही हूं, तेलुगु मुझे नहीं आती। आज थोड़ा रिक्वेस्ट आया है कि आप थोड़ा हिंदी में करें, तो हम दोनों मिक्स करेंगे, 50-50 कर लेंगे। मूलतः आंध्र प्रदेश के हैं खादरवली सर। बैंगलोर से इन्होंने स्टेरॉइड पे पीएचडी किया है। देखिए, मेडिकल साइंस में स्टेरॉइड बहुत कॉमन, लोग मेडिकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमारे पास वो एक्सपर्ट हैं जो स्टेरॉइड पे पूरी पीएचडी किए हुए हैं। डॉक्टर खादरवली, आपसे ही हम शुरू करते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जो बेसिक क्वेश्चन जानना चाहते हैं, दैट प्लीज टेल अस सर, हाउ योर जर्नी एज ए मिलेट मैन स्टार्टेड, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस beautiful journey? Yes, it's been a beautiful journey. Thank you all, especially both doctors who have invited me to address you people, and it's a pleasure and privilege to come to an exclusive group of doctors who have actually realized that medicine is not working and we need to get back and search for something else. And that is the open mind that I am actually looking for from all these scientists and doctors. My journey started on two fronts. One was that I was with a university where I was working on toxins, the degradation of the toxic materials like dioxins and Agent Orange and such deadly chemicals, and we were trying to degrade them biologically because chemical processes are very dangerous. So in that regard, I picked up my first incident was to meet a girl who was menstruating very young at the age of 6 in America in 1987. Right. So
having worked in the field of steroids, I immediately knew that there is something wrong with these people, and I inquired with the doctor, thinking that it's a rare case, that one small girl might have had some problem. But then within 2 hours, I realized that the whole America, girls are menstruating at the age of 8 or 9 or 10, and this girl was little too early. That's all. Yeah. So it's a generic problem, not a individual specific problem. So immediately my mind, I was very young, just when I reached America at that time, I think I was 27 or 26 years of age. And having done the PhD on steroids, androstenedione, testosterone, progesterone, all these sex hormones and degradations of. So I just finished my thesis, and then so I go there, and then I come across with this problem of human race in America started disturbing themselves with the imbalance of hormones. And hormones, as you all know, the most crucial chemicals in our body, which supervise many, many biochemical processes. So if you screw up the supervisors, the whole system goes haywire. So I was just shocked to know that the kids are being given the milk, which contained so many steroids, not only the hormonal steroids, even the protein steroid like oxytocin, which is very bad stuff for us to have it in larger quantities. So Right. all these things really disturbed me. But then because I just went there 27 years old, I was thinking, what should be the solution? If but then the doctors and the system didn't care about it. No one had even questioned that. They were all looking, oh, we give another hormone tablet, it will stop, the bleeding will stop. So I immediately knew this system is working in completely hodgepodge way and unscientifically, the so-called scientific system. So that's when I started looking at each and every material that goes into our mouth. So that was the initiation process of looking at everything that the human race has done till then. And I started researching, being there in the good place with a lot of library. I had access to get information. And then after 3-4 years of spending my time in that university, I actually wanted to work on food, came back to India, joined a Food Technological Research Institute. But then within 2 weeks, I realized these institutes are all in the hands of these multinational companies and nothing can be done. So I was just looking for an opportunity to leave the place, and I had to go back to America again. But this time I went into the lion's den, and the DuPont company, which Right. Right, got it. It was funny. I just didn't want to go into a corporate company. I just did not like the fertilizers and pesticides and all these deadly things. But then the fate would have it that I had to work in that company for 4 or 5 years, and I guess it was meant to be like that. And I did learn a lot of things being there. Worked in genetic field and lot of pesticides, drug discovery, pharmaceutical, and worked in different departments of this wonderful, I should still say wonderful company, because it's a huge company. A lot of work goes on. Yeah, DuPont, and a lot of experience. And I learned a lot of things and learned what not to do. Most important thing. Yeah. Learned what not to do. And all the frontier science technical aspects were very clear to me, because I was involved in many groups, many kinds of research. So it was a wonderful learning experience. But then there was no answer. There was no answer for my questions. So I knew we are doing wrong things about food, the way we grew the food, the way we were spoiling the soil. In fact, the main intention of my coming back to India is to preserve our mother nature, earth. The soil was getting deserted because of the modern agricultural techniques. So we need to get back to the roots and then figure out how to save our land.
see, without the land, we cannot produce the right food. And without the right food, there is no health of the human race. So Yes. ultimately, it is not even the food that is important right now. It is how to grow food and how to conserve the soil's fertility. And Most a important. lot of modern day agricultural techniques have been incessantly at this point of junction destroying the soil's fertility. Whatever you do anywhere on this planet Earth, the modern day agricultural techniques have taken over. Not only the scientists, the governments, everything is under their kabja, bolte hai na Hindi mein. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, it's all in their hands. So now Yes. doctors, scientists, governments, everyone is talking about what these companies want us to learn, nothing else. And that is basically the reason why you have no course of what is food in MDMS courses also. No Totally curriculum. agreed. एकदम सर Absolutely आपसे zero. Not एकदम even agree one करते हैं. page. Yes. So that is the sad state of affairs, because the establishment taking over everything and then dictating the terms. So in fact, we know very well that these pesticides and fertilizer companies know if you take care of the food, then they can control the people. And with Yeah. this single agenda, few big companies in the world have started their business path in the range of around 1970s and 80s and taken over the world. And that is the only reason why the whole world is eating the way they are eating now. I Yeah. cannot believe, as you said, you have McDonald's and Subways and In Domino medical Pizza. college. In the Yeah, in medical a college. medical college. Hello. And everyone knows that these are the things that you want to avoid. Absolute Yes. mayhem we have created. And a medical college harbors this kind of food habits to the so-called doctors. You cannot say any more sentences beyond this. Totally agree. So Totally agree. absolute mayhem we have created. And so the simple rules were that we have created hormonal imbalance due to the use of milk, which is produced the way it is produced in trillion liters on this planet Earth. The most horrific thing that you can think of is the way we have induced mutations in the cows and then started producing milk in tons and Yes. tons of it, each cow producing 20 to 30 liters per day and non-stop. They have become machines of milk productions, not anymore cows that can actually rear kids and love their babies, and all that is completely wiped out. It's Yeah. all machines. And you expect your kids to be healthy, putting them into their mouths this milk that is coming out of machines, completely genetically disturbed, and then we assume that we all can be healthy consuming this milk. And on top of it, the industry keeps telling milk is good for you, calcium is important, all this bogus information which is absolutely out of a wink. We started harboring all this in the form of food, and nutrition industry started teaching everywhere all this Yes, doctor. in the form of curriculum. We have to Doctor- have protein. What protein? Like Sir, this. if So we all please started make your accumulating microbial imbalance, hormonal imbalance, and then choosing the rice and wheat as the staple food. The whole world did the biggest mistake of not able to maintain the glycemic index, pumping glucose into the blood in large quantities, Yeah. creating glucose imbalance. So these are the three major mistakes the industrial food culture has induced into the brains of the so-called food scientists, health scientists, and whatever you call all these people. So unless we concentrate on these three imbalances that we have created due to the mistakes of industrial food production of the food and then spoiling the earth and then creating a food which can completely imbalances in three different dimensions, that is energy level, glucose, and hormone level, chemical level, and then microbial level, living forms. And microbes are so important in our gut
without whose symbiotic existence we cannot make many different kinds of biochemicals that are needed by us. Example is vitamin B12. But then what does this industry do? It says vitamin B12 is available in meat, so you all eat meat, which is absolute nonsense scientifically. So the meat and fat is produced with the excess of glucose that we, after digestion, produce in the blood. So not only the last product of the digestive system, glucose, it is the byproducts of glucose that we are taking it as raw material into our mouth, which is the most unscientific thing biochemically. So the end products are being fed as the starting materials for our digestive process. And this is the scientific and technical problems that the way we are eating our food. So you should not be eating any grain which releases glucose very fast into your blood, which are actually main characteristics of rice and wheat, because they suit the industries to have water logging, add fertilizers, add pesticides, add insecticides. All these businesses have to flourish, means they have to choose rice and wheat. And that's how the parameters of decision making is gone into the hands of these fertilizer industries and things. This all happened after the Second World War, which we started, the bomb material being converted into fertilizers, and all that stories everyone knows. So I don't need to go back to the history. But right now, I'm concentrating on why the agriculture and the food that we produce are the two things that actually are very important. But the whole medical world, the doctors are completely removed from the food. They don't even know what food is, how the rice is grown, how the wheat is grown, how the meat is made. All this is irrelevant for an MD, MS doctor. What all he does is, you have this problem, you take this tablet. You have this problem, you take this tablet. So you have matched the following: diseases list, medical tablets list. And that's all they are being trained into. So this is the sad story of industry. Let's forget about it. Now, what do we do? How do we get out of this? How do we correct these imbalances? So these three imbalances, how can we correct, and where do you get these imbalances corrected from? And it has to be from food, not from, again, supplements or this or that. But then there has been an issue of thinking that we can change our diet and then cure certain conditions. That is possible. But I'm not actually looking for a diet plan to cure diabetes, to cure hypertension, to cure cancer. It must be a holistic way. I'm trying to correct the system by taking food. And another important medical fact, not medical fact, physiological studies is that our body, each and every cell, regenerates itself and replenishes itself. For example, hemoglobin takes 3 to 3.5 months to regenerate new 90 cells. days, totally 90 got new days, hemoglobin. yeah, like that. And in 7 years, almost every cell of our body gets replenished. Yeah. So while this happens, we keep supplying the wrong food materials, because everything has to be made out of the food that we eat into our mouth. Food. So what will you do if you keep supplying the wrong bricks to the house? You build a weak system. Building. And that's what is actually happening over the period of decade to decade. We are seeing the health problems not multiply, they are actually going exponential. Exponential growth is there. Exponential growth of diseased persons and diseased conditions, and we have no answers. In fact, the Spanish flu in 1918 gave us certain lessons, and we have forgotten to do anything about it. And now we are with COVID-19, and no difference. So human race has not traveled in the positive direction, not even an inch. Because whatever we did, we are doing the same and we have no answers. And it's the best time we should learn. Yes, we are best from this. And so the viruses, you cannot wipe it out. You cannot go on Never. chasing the viruses. Instead, what you need to do is build immunity. So 15 to 20 years back, when I started talking about immunity,
doctors and friends and everyone is looking at me. What are you talking? What are you nonsense? This is how they treated me. But then I have been telling, without immunity, without dealing to know how to take care of this microbial pathogenic microbes, keeping at bay is the first and foremost important thing for the human body, because many of the diseases, so-called chronic diseases, start from simple thing like cold and cough infection. By not able to manage it properly, we leave toxic things in the body, which then slowly turn itself into chronic disorders. Many instances, like people losing their hearing capacity, not having the smell, that is because of being not treated right by the so-called doctors in the form of antibiotics, in the form of steroids, in the form of painkillers. We are screwing up one after the other. The conditions of being wellness is screwed up by the medicine. So Right. it was very clear for me that medicines, and trying to create more number of medicines, more antibiotics, we are only educating the microbes to be stronger and stronger and stronger. Great. And everyone has the experience. If you're a doctor, that ICU conditions, you have to clean up the system with antibacterial drugs first, even before you know what you have to treat the patient for. So this kind of unscientific things we have been propagating in the name of allopathic world, which is supposed to be scientific. So all these gaping holes clearly indicated that what we need to take care of things is not to kill the virus, not to kill the chicken, not to kill the bat, not to kill But the increase the immunity. Yeah. So these are going to be there. You cannot live without all these wonderful things in nature. So you have to become strong. So how do we become strong? To make the antigens in wide variety be exposed to it even before you are growing up. So by the age of 10 or 12, you need to be exposing your babies with various kinds of vegetables, greens, and various kinds of fruits and various kinds of grains. So people have forgotten that the basic food is grains. So people think, oh, I eat rice and wheat, then change my other things. So I will have haldi tea, I will have ginger tea, I will have this, and people think they get immunity. But basic glucose imbalance and microbial imbalance is screwed up. Without that, you cannot get immunity. So I'm talking about health as a whole. It is not to cure diabetes, it is not to cure that, it is not to cure this. So you want to tinker somewhere, something else happens. So how do you do that? So you should not do that. So from the beginning, even before the baby is conceived in the womb, you need to understand the mother and father, the sperm count, everything has to be healthy. So this is how my journey began, and started working out all these details. And so to produce the right microbes in the intestines, guts, because that's the basic first defense, you need to produce the food that harbors this wonderful symbiotic bacteria that can pass through your stomach, acidic condition, and then go and stay and make colonies in your intestines. So that is possible only through various kinds of leaves, various kinds of grains, various kinds of vegetables. For example, I'll give you one. You have this mirchi. Yeah. If you remove the stalk, you can just rub that on any microbial plate, you will see lactobacillus coming up. Okay. And that's how our ancestors fermented the milk. If you didn't have curds to start, they just put 10 or 15 green chilies, removing the stalk, into the boiled milk. You will get wonderful curd tomorrow. Curd. Like that, each and every vegetable and greens have wonderful microbial populations which will start, and that's why they are called prebiotic food. So they go and harbor wonderful microbes. लेकिन हम तो अपनी एंटीबायोटिक्स के थ्रू, पेस्टिसाइड्स के थ्रू उन सारे जो माइक्रोब्स है उसको मार रहे हैं, और वो जिस चीज को हमारा हेल्प करना है उसी चीज को खत्म करके जो बिग कॉलोनीज आर देयर.
तो डॉक्टर खादर, इस जगह पे हम लोग जहाँ पहुंचे हैं, तो इस जगह पे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको हिंदी में भी लेंगे। तो आपने जो ग्रेन्स है उनको 3 डिवाइड किया है, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। तो जो आपका श्री धन्य जो आपने पूरे वर्ल्ड को दिया है उसके बारे में हम बताइएगा। आई एम कमिंग टू इट। ये क्या है, ये माइक्रोबियल बैलेंस हम कैसे हमारा पेट में भरना है, and what is the basic source of this wonderful microbes. Many may think that if I take this decoction, that decoction, you will get different kinds, but भरपूर रहने के लिए हम खाना है. We have to have a staple food, and the staple should be defined. So if you eat rice, and many people think you can make rice porridge and ferment and take microbial, but then the rice itself has glucose imbalance. So that means it produces a lot of glucose and floods your blood and intestines with glucose. So glucose-rich, loving microbes infest. And that's how you start infesting even the microbes that are pathogens. Right. So that means we need to define these grains which do not produce glucose in a hurry-burry. They should not flood the glucose. So slow release of glucose should be there. Slow release of glucose into the bloodstream. We should not flood so that is the characteristic of a grain. So I started looking at this list of grains that the human race has produced and actually worked with 20 grains on a diabetic patient, HbA1c being 8 or 10. I started feeding, asked him to take porridge of ragi, porridge of bajra, porridge of rice, porridge of wheat, porridge of kodo millet, porridge of... So each day you collect his urine and check for glucose after 1 hour. That is called renal tolerance test. Sab logon ko malum hai ye. So once you check the renal tolerance test, whichever grain has glucose appearing in the urine, that means it has failed the renal tolerance test. That means the glucose is coming like a flood into the blood. Right. Within 1 hour, you get the glucose in your urine, means it has gone through the whole cycle like this. And these 5 grains come out on top. It takes more than 4 to 5 hours to see the glucose in the blood, in the urine of the patient. So that's how I made the list that is present in the book. Once that is done, it was very obvious for me that these grains harbor wonderful microbes. So I started making fermented porridge. Khameer bolte hai aap Hindi mein. Khameer, yes. So ye patients ko hum khameer pilane ko shuru kar diya. Lo and behold, in 3 weeks, people started becoming well because the imbalance that is created in the gut is started getting complete. So once we started correcting the glucose imbalance, microbial imbalance, and the hormone imbalance, not taking milk, not taking coffee, not taking sugar, automatically starts correcting. So I found the wellness returning back to almost all kinds of patients, be it a heart patient, diabetic patient, cancer patient, dialysis patient, 6 weeks to 9 weeks. So that's why I keep telling people, you have any problem, start with this khameer. Daily once at least, if not 3 times. Okay, so that is how we can correct everything, start correcting things. And lo and behold, in a matter of 2 years, we started finding almost all the so-called symptoms of diseased condition disappearing. Because we actually are imparting the imbalances being removed in single shot by choosing these wonderful grains and eating different kinds of greens and vegetables. And being vegetarian is the most important thing to become healthy. So health depends on completely the choice of food, not what you do after you get the sickness. So the sickness is prevention is better than cure. And actually there is no need of talking about cure. Only when you're sick you need to cure. Yeah. So then all of a sudden down the road I realized that we need to be talking about health instead of sickness. Exactly. So how to be healthy is our conscious focus.
should be, not, oh, I have got this disease, this is the reason, so you eliminate this, you get this chemical and then correct this, and something else gets screwed up and then you do something else. So it's a wild goose chase, the way the present day medical system is trying to fix a problem. If nothing else, I will create a new organ, remove the bone, remove the heart, I can print on 3D printing done technology. All nonsense things. When you can remove the problem by just correcting the food itself, because it is through the food that we exist. And so we need to start respecting the food, and how do we cook the food, how do we grow the food. So these things became very important for me. Right. And in that direction, I traveled and started learning to grow these grains, along with growing without insecticides, without fertilizers. How do you grow? So in fact, this made me invent or discover what we call jungle farming. So the whole attention for me started in that direction. So now you see, I started with thinking of giving good health, but then we started correcting the health of the mother nature. So we actually took a deserted land and then now converted into a beautiful forest of 3 acres, which can sustain 10 acres of food production for hundreds of people. So that is another model which we have created near Mysuru. Bidrahalli is a place. Now we keep training farmers in the methods of our earlier, without disturbing nature. No water is required, no pesticide, no inputs from outside. So then we started creating a sustainable model from within. So the health should come from within, then the food production should start being sustainable. So all these things are linked to one another, but then present day industrial food culture has separated each and every department, and not knowing what is what, we are creating havoc in people's life. So this is the inside story of how things have happened, and the results are there for the world to see. So if you switch to this kind of food, and hence totally I want to end summing up, and we will enter to the discussion mode. Food is right, then there is no need of medicine. And if your food is wrong, no medicine can cure you. No medicine works, period. So the lessons are, immunity comes from having the balance of glucose, hormone, microbes. All these three have to be balanced in your body, and for them to be balanced, your food day in and day out has to be balanced. And the regular balance can be created by the food grains which have got the fiber to carbohydrate ratio in single digits. And these 5 grains carry on all these characteristics and answer our prayers. So that's how I feel blessed having come to this 5 grains. And I believe there may be many more grains in the world. It is for the future generations to do the research and figure these things out. The methodologies are very clear for people, for the future generations to do with. And the reason why other researchers are not looking at it, because they're looking for some diet plan for this disease, for that disease, for this disease. I was not looking to cure diseases. I was thinking of how to be healthy. How to be healthy. So once you are healthy, you will not need any medicines. Of course, there may be some emergencies, accidents and all that. Not that we don't need doctors, but certainly we can close down more than 70% of hospitals that exist today if we follow this wonderful food. पर आजकल तो जो हॉस्पिटल्स है वो मशरूमिंग है. अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले जो इतने इनफर्टिलिटी सेंटर्स नहीं थे, आज से 20 साल पहले इतने कैंसर हॉस्पिटल नहीं थे. तो आज IVF सेंटर्स हर गली में आ गया है ना. Yes, IVF सेंटर्स. Yes. So what does that mean? हमारा स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, हमारा ओवरीज अच्छा नहीं है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स सही नहीं है. ये सब इसका परिणाम होता है ना. सो हमको जरा दिमाग सोचना पड़ता है.
तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ में दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे किसान भी हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोग हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है, हमें इन 5 ग्रेन जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं डॉक्टर खादर वली, उसके बारे में बताइए, और जो खमीर उनका कैसे बनाया जाता है वो भी इनको बताइए। तो बहुत बहुत सीधा आई विल साधा है। रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट टू म्यूट। ये 5 दाना में प्लीज टॉक इन हिंदी। फॉक्सटेल मिलेट को कंगना बोलते हैं, कंगना, कुटकी, कोदो और हरा सावा। ये 5 दाना ये फाइबर में, ये रेशम क्या कहते हैं फाइबर को हिंदी में? रेशा बोलते हैं। रेशा बोलते हैं। ये रेशा वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। अराउंड 30% ऑफ इट इज वाटर इनसॉल्युबल। सो ये सॉल्युबल फाइबर ये पानी में डालने से अंदर अंतर्लीन होता है ना, ये फाइबर हमको बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। सो व्हेन यू ईट फॉक्सटेल मिलेट, ए कंगना, फॉक्सटेल मिलेट, उसका रेशा में हमको लंग्स और नर्व्स शुद्ध करने का ये गुण जोड़ा है। फॉक्सटेल लंग्स और नर्व्स के लिए, हाँ, नर्व्स के लिए बहुत बहुत अच्छा क्लीनिंग कैपेसिटी एंड द माइक्रोब्स दैट दिस फाइबर हार्बर्स हमारा इंटेस्टाइन में, वो तो बहुत बहुत अच्छा बनता है। सो नर्वस डिसऑर्डर्स, ये क्या देखो, आपको पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, या mentally you are disturbed, you do not have concentration, you are stressed and you want to resort to drinking coffee, smoking, or some addictions. I mean, all these things indicate you are all in trouble with nervous problems. So your breathing gets disturbed, you start breathing hard, and then you start shouting, and all these symptoms relate to foxtail. Right. So you want to make खमीर, कैसे बनाएंगे खमीर? रात को हम भिगोना है पानी में, सुबह तक 8 to 10 hours you need to soak the grain. क्यों? रेशा है 8%, 8% रेशा है foxtail में. So you need to soak well, because the grain, that layer after layer, there is fiber surrounding the carbohydrate, concentric circles. So it has to slowly soak the whole fiber and the carbohydrate. उसके बाद हम बर्तन में मिट्टी का बर्तन में कुक करने से बहुत अच्छा होगा. You can also cook in steel vessel, no problem. But for fermentation, after cooking, आपको मिट्टी का बर्तन में बांधकर ये कपड़ा, खादी कपड़ा ऊपर बांध के 10-11 घंटे रखना है. Of course, Mumbai, Delhi, hot places in summer, you don't need 12 hours for fermentation. कम समय चलेगा. कम समय तक चलता है. ये सर्दी में दिल्ली में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना आता है. Maybe one full day it may take if your temperature is 3 degrees or 4 degrees. पंजाब जाए तो हाँ गए तो आपको it is like 3 to 4 degrees in the winter. So you cannot expect fermentation to go on very soon. So you may need to keep long time or keep it in a warm place. You can keep it in a warm place. In fact, there are many instruments nowadays with light warmers called fermenters also. You can just keep the whole bartan उसमें रख सकते हैं. So within 6-7 hours you make the khamir. वो खमीर ऐसा ही पीना है, खाना है आपको. फिर वार्म नहीं करना है. वार्म चाहे तो आपको गर्म पानी में ये बर्तन बिठाना है. एक स्टील टम्बलर में डाल के खमीर गर्म पानी में, आप डायरेक्ट स्टोव में नहीं हीट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स जो होंगे मर जाएंगे उसमें सारे जो होंगे. Absolutely. So we want the microbes. Of course, हमारा दक्षिण भारत देश में ये इडली डोसा फर्मेंटेड बैटर को हम तवा में डालते हैं या स्टीम करते हैं. So उससे फायदा क्या है? ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, तो माइक्रोब्स तो मर जाता है. माइक्रोब्स से मिलता है. हाँ, so idli is better than your direct rice. डोसा is better, but then idli से डोसा से अच्छा है ये खमीर. Yes. Because you are getting the microbial products as well as microbes themselves. And plus fiber also.
Yes, plus fiber and lot of chemicals that they can go and start producing within your tummy. So all these wonderful things. That's why for me, anyone wants to, you give me a tumbler khamir bas, that is like अमृत से समान है. So कोई पेशेंट हो, पहला आपको देने का अमृत यही है. So if you associate your disease with the nervous system and lungs, you give foxtail millet. So कोडो चावल का क्या होता है, हमारा बोन मैरो को स्वच्छ बन जाता है. कोदरो मिलेट, blood related problems and bone marrow, the production of immunity is associated with kodo millet. So in the time of COVID-19 or Spanish flu or H1N1, H5N1, क्या खमीर पीना चाहते हैं आप? कोदरो का खमीर. Right. So right now I advise all people, keep drinking kodo khamir at least 1 tumbler a day. You will feel absolutely fine. No COVID, nothing will happen to you. The corona will not even come inside because you will produce the antibodies and be ready. And along with तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया हमें कोविड के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, जिसको हम लोग पिछले 3 महीने से बोल रहे हैं. जो कोविड के जाने वाला नहीं, हमारे साथ ही रहने वाला है. हमें खुद की इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी. This is a drama that all these systems create. They want to create fear, and now they have lifted their hands. Everything is over. We cannot do anything. Now take care of yourself. वही हम बोल रहे हैं. लंबा कहानी है. हमारा हाथ में है, हॉस्पिटल्स में नहीं है. हमारा हेल्थ हमारा हाथ में है, हमारा खेत में है, हमारा किसान पे हाथ में है. किसान पे. So हम किसान के और देखना है, उसको रेस्पेक्ट देना है. हम दूसरा तरफ देख रहे हैं. We are looking at a different side. We need to respect our farmers so that they can grow our food and give us the right food. अभी तो क्या किया है, farmers को laborers बना दिया है in the name of modern agriculture. ये बहुत गलती हुआ है हमारा human race से, which is high time we checked these things, rethinking has to happen. We need to have a different vision of human race for future. So produce the right food, produce the right methods of food production, and then distribute the grains, the right grains which can create microbial balance, hormonal balance, and glucose balance. So on all these accounts, the present day industrial food culture gives you -100. And हमारा ये रागी, बाजरा और जोवर, ये तो 0 to 100 marks. These 5 grains I can give 1000 marks plus 1000. So now you have eaten rice and wheat, you are -100. So -100, it has to become positive, means आपको बाजरा खाने से नहीं होगा, because it is 0 to 100. So 100 minus 100, again you are in 0. So you want to go beyond 100 plus you want to eat something plus 1000. So यही ये 5 grains का. So कोडो बताया है, फॉक्सटेल बताया हूँ, और बार्नियार्ड का मैजिक होता है किडनी पे, लिवर पे, पैंक्रियास पे. So soft parts of the viscera, these wonderful fiber starts cleaning up this. So you have any problems with the liver? लिवर क्या होता है लिवर हिंदी में? जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जिगर बोलते हैं. जिगर, ओके. नहीं और एक शब्द है यकृत संस्कृत का है, कलेजा काट के दूंगा. So that's how they say. It's better than your heart. Say if in a friend's, hey, कलेजा काट के दूंगा. So that's the importance of liver, because that's what does every protection. Everything happens with the liver. So you want to protect your liver, आपको barnyard खाना है. That's the wonderful grain. So khamir bana ke. So you have liver cirrhosis, alcohol-induced liver cirrhosis, all these hepatitis B, hepatitis.
See, there are viruses that are harboring, they will never go away. But then you eat this khamir, your protection of liver happens in a matter of 6 months. We have gotten rid of all these so-called hepatitis series of viruses. No time. 6 months to 1 year, we have got negative. No infection. So that's the magic this barnyard millet does. So what it means is that I don't intend you to take only barnyard, but if you have liver problems, take more of the barnyard. So एक हफ्ते में 3 दिन barnyard लेना है और 4 दिन एक 4 दाना लेना है. फिर रोटेशन में ऐसा ही करना है. So 6 months में आपका liver problems खत्म हो जाएगा. फिर उसके बाद आप 5 दाना 2-2 दिन रोटेशन में खाते ही रहना. You are healthy. ऐसा करना. So आपको ब्लड कैंसर है, क्या करना चाहिए आपको? कोदो मिलेट 3 दिन और एक दिन remaining 4 दाना. Yes, that's the way rotation. Now I have talked about barnyard, kodo, foxtail. Let's come to brown top. ये तो कमाल का दाना है, क्योंकि this fiber 12.5% out of 100 grams if you eat starts cleaning your mouth from the tongue to the anus. The whole digestive system it takes care of. So that means it becomes the most crucial grain. So you want it to have in your food in a week at least 2 days, because the digestive system where the food is processed itself has to be clean and tip-top shape. So that can be achieved by eating brown top millet. हम हरा सामा कहते हैं ना, हरा सामा. So you have rectal cancer, you have intestine cancer, you have stomach cancer. The first food that you are looking for is brown top millet, khamir pina hai. Then and the last one, the most important for the human race, because without which you cannot reproduce healthy babies, that is little millet. Kutki, beautiful, because the fiber of it, which cleans up all the regenerative reproductive organs, be it ovary, be it uterus, be it fallopian tube, and all this endometrium, all these issues connected in women, and then sperm production and your testis. Is it like PCOD can be treated with Absolutely. this? PCOD will be driven out of your body by making the girls eat 3 days little millet, kutki, and then the remaining each one day. Khamir se shuru karna. Khamir should be our, like, everyone should be having khamir every day, at least 1 tumbler of some millet or the other. ऐसा. Right. And हमारा अदृष्ट ये है, हमारा भाग्य, हमारा देश में रागी है, बाजरा है, जोवर है, ये सब भी अच्छा है. लेकिन कब अच्छा होता है हमको? हम हेल्थ कंडीशन में रहने के वक्त. So if you are sick, you want to eat these 5 grains. If you are healthy like me, I can eat now 10 grains. Right. जोवर खा सकता हूँ, रागी खा सकता हूँ, बाजरा खा सकता हूँ. बाजरा तो इनके बारे में डॉक्टर कोली ये बता सकते हैं, इनको सुबह खाया जाए, दोपहर में खाया जाए, रात को खाया जाए, किस में ज्यादा? 3 बार खा सकते हैं. But after age of 40, I want people to eat twice. First in the morning, have a good meal. Then afternoon, आप कुछ एक small tumbler खमीर पी सकते हैं, या एक fruit खा सकते हैं, या कुछ vegetable salad खा सकते हैं. रात में और एक बार खा सकते हैं, बस इतना ही. So don't eat too much. Eat little less than what you can. That is after 40-45. Till then, you please eat well. Eat very well. And let your first meal be big. Then the second meal be less. And then third meal be still less. This is good for everyone. Even if you are a young boy, you eat well in the morning. But the problem with these British fellows came to our country, we started all topsy-turvy. So eat breakfast, small amount, and then afternoon you eat this much. Night you eat little more. So it's a bogus way of eating. So I want people to turn it around. So eat well in the morning. First meal should be very well done. I mean, eat everything, whatever you want. Khamir piyo,
रोटी खाओ, पराठा खाओ, पराठा भी बन सकते हैं, हमारा ये मिलेट से, नो प्रॉब्लम। यस, और क्या कुछ बन सकता है डॉक्टर खादर भाई इस मिलेट से? एक तो खमीर बन गया, और क्या कुछ बन सकता खमीर है? बन गया, चावल बन सकता है, रोटी बन सकता है, पराठा बन सकता है, यू कैन मेक ब्रेड, ऑल काइंड्स ऑफ cooking things which we have got a cook book in Telugu and it is being translated into English and Hindi. अभी Right. 1-2 महीने में आ जाएगा, हम भेज सकते हैं आपको। अगर हम PDF सबको free है। वो पूरा इंफॉर्मेशन वो 5 मिनट्स के बारे में हमें चाहिए होगा, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? अभी तो एक sirijeevan.org एक वेबसाइट है, वो sirijeevan.org मुंबई में एक सूर्या नाम के पर्सन है, वो रन कर रहा है वो sirijeevan.org, SIRIJEEVAN.org। और ऐसे तो हमारा दक्षिण भारत देश में बहुत सारा फेसबुक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो फ्लोट कर रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अभी इंग्लिश में भी शुरू किया है कुछ लोग। सो देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो डेप्थ फॉर इंफॉर्मेशन। अभी तो डॉक्टर खादर भाई आपके इतने फैन हो गए हैं, इतने लोग आपके जो डाइट के हैं, उसका डाइट का नाम ही डॉक्टर खादर भाई डाइट पड़ गया है। डाइट का वो शब्द निकालना है। डाइट प्लान तो डिफरेंट है, हमारा तो डाइट प्लान नहीं है, ये सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग फॉर ह्यूमन रेस, बिकॉज इन प्रोड्यूसिंग दिस ग्रेन्स वी डिस्टर्ब नेचर द लीस्ट। तो पानी कितना चाहिए मालूम है आपको? ये बिहार है ना आपका, 10 करोड़ पीपल, उसका पानी मुझे दे दे, हम होल इंडिया एंड चाइना को खाना बना के देंगे। क्योंकि अरिड रीजन का जो सारे मिलेट्स है यहाँ के, उनको पानी बहुत कम चाहिए, बहुत पानी नहीं चाहिए बोल सकते हैं। 1 kg उगाने के लिए हमको 200 liters is all that we need. So if you give me 1 kilo of rice water, I can grow 50 kilos of this. So बहुत important है environment के लिए। So ये सारा information we have been trying to communicate to people, and this is the future for human race. There is no other option. There is no other option. You cannot grow rice. पानी कम हो रहा है धरती से, पानी कम हो रहा है, और मोनोकल्चर जो हमारा व्हीट एंड राइस का है, उसने एकदम से पानी का जो एकदम से खत्म कर दिया है। All our problems, and if doctors do not talk about it, the rampage will continue the way it is going on. So to increase your immunity, we have also come up with kashai, that decoctions of various kinds of leaves, out of which we have done experiments. 7 leaves kashayams immediately give you immunity temporarily. बताइए उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे। दूरवा, बेसिल, गिलाई, बिल्वा और करंज और नीम और पीपल, ये 7 पत्ते का डिकॉक्शन 2 दिन आप पी गया तो 1000 times better immunity than whatever you had before. एक सातों को इकट्ठा बनाना या अलग अलग बनाना? एक दिन पीपल का बनाना, अलग 2 दिन एक पत्ता का। सो पहला 2 दिन दूरवा, दूसरा नेक्स्ट 2 days बेसिल, नेक्स्ट 2 days गिलाई, नेक्स्ट 2 days बिल्वा, next 2 days karanj, next 2 days neem, next 2 days people, 14 days again another cycle. ऐसा साइकिल रोटेशन कर सकते हैं। इनको पानी में उबाल लेना है। 3-4 रोटेशंस में आपको कोरोना भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। And whatever, this is a trailer, there are going to be many more viruses. This is only a trailer, believe me. Yes, agree, totally agree. So we need to be prepared so that this same thing we don't replay. So we all should be immunity strong, not immunity compromised, as the present world has recognized that we have almost no immunity, and we are waiting for the immunity to develop for the antigen of corona. It will take 6 months to 8 months. Till then, there will be mayhem. It will kill people. So in another June and July, then corona cannot do much to us because we all will slowly develop immunity. And that is the story with every virus.
Exactly. And we don't need to scare people that we have no vaccine. There is no need for vaccine. Absolutely. No vaccine is going to help you. Because corona, you don't need vaccine afterwards. It becomes like common seasonal flu. It will come few people and then it will go away. Nothing happens to us with corona. We all will. But then when the new things come, are we ready? Is the question. And That's the for question. that, this is the way we need to prepare. And nature has the answer, not the vaccines and medicines. So for South India and North India alike, these 7 leaves will give us wonderful immunity. And believe me, the Indians have better immunity than any part of the world, because we are still not a meat-eating country the way the others are eating. बढ़ गया है, मालूम है हमको भी. पिछला 20 साल में India is also becoming a non-vegetarian country slowly and steadily. But overall, we eat very less meat compared to other countries. अभी हमारा मुस्लिम भी हर रोज नहीं खाते हैं, संडे खाते हैं और एक दिन खा सकते हैं. बहुत ज्यादा पैसे है आपके पास, अभी 5 साल से लोग खा रहे हैं, हर रोज हर मील पे मीट खा रहे हैं. लेकिन आप अमेरिका गया तो इंग्लैंड गया, वहाँ सब लोग 3 बार 4 बार मीट खाते ही रहते हैं. And that is the reason why you have immunity completely compromised. So you want to be immune strong, you want to be vegetarian. And there is a slight explanation for milk. ना milk को हम दही बनाने में non-vegetarian से vegetarian को convert करता है, because of the lactobacillus. Fermentation is the connection for the vegetarian world and non-vegetarian world. So हम vegetables खाते हैं, उसके अंदर हुआ ये microbes converts the vegetarian food to meat. The vitamin B12, all these things come into play, and then we start producing meat in our body. And that's how all the animals produce meat. Yes. Okay, so carnivorous animals eat meat and then produce their meat. Their genetic system is like that. But our system is, we produce meat through the vegetarian, plant-based food, because the amino acid sequences, digestive processes designed in our body with that, not the animal fat or animal protein. So we need to make our fat, our protein through this microbial assisted processes, not the other way around. So if you take milk, fermented milk by lactobacillus, that is how dahi acha hai. Hamara Guru Nanak Sim, they are called lacto-vegetarians, because the lactobacillus acted upon the milk. So lassi अच्छा है, दूध अच्छा नहीं है. ऐसा ही हमारा साउथ में भी बहुत सारा बढ़िया लोग, इंक्लूडिंग बसवन्ना, और सब बता दिया है, दही is okay, छाछ is okay. हाँ, so they are called lacto-vegetarians. But of course मक्खन अच्छा नहीं है. हाँ, correct. दूध का मक्खन अच्छा नहीं है, दही का मक्खन ओके है, because it is fermented. So वो घी बनाने में भी दही का मक्खन लेके घी बनाते हैं, वो अच्छा है. So दूध का मक्खन लेके कुछ लोग ये पनीर ऐसा वो तो अच्छा नहीं है. मालूम हो रहा है ना. तो उसमें बच्चों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम देख ही रहे हैं बच्चों का कितना प्रॉब्लम बढ़ गया. मेरा खुद का ये ऊपर से दूध पिला रहे हैं ना, वो तो बहुत डेंजरस है. इसीलिए हम बता रहे हैं alternative milk should be vegan milk. A vegan milk आ जाता है. Coconut milk is the best. Coconut milk is the best for the whole baby world. And coconuts are available all over the world in tons and tons. They simply keep falling. In Kerala, you go, they will provide the whole world. Right. You don't need to do any agriculture for this. You don't need to grow coconuts in the midland. You just have to go to the coastal areas. You will get backwaters. So, and coconuts are so well designed that you don't need any preservatives. Nothing is required. You can transport it from anywhere to anywhere. It will stay for months together. So it's so well designed by nature. Instead of recognizing that and using it as milk source, we're all running in big dairy industry, killing the whole plantation, the whole world
desertification is taking place because to produce milk. This is Actually, the problem. that milk is for the cow. That is गाय the के most बच्चे के लिए है, गाय के बच्चे के लिए, आपका वो आपके बच्चे के लिए and the hormones, the nutritional values are all designed for the cow's baby, not for your baby. So your milk is for your baby. Instead of we giving milk to our babies, we are trying to kill the animals and get the milk and give to us. So this is the biggest unscientific thing that we are doing to our kids and compromising the immunity. See, that is the biggest problem, because the steroids that are going through our system are going to immediately spoil your immune system. Autoimmune problems are increasing because of the milk. So I keep telling in my lectures, कभी-कभी मैं बताता हूँ, आप मिल्क दूध पीने का बंद करो. Yes. We will close down 50% of hospitals. इतना असर पड़ता है. डॉक्टर्स भी होते हैं ना, कोई बच्चा हमारे पास आता है, पेशेंट आता है बच्चा, तो पहला काम हम मदर को ये बोलते हैं, इसका मिल्क एकदम बंद कर दो. Yes. मदर आगे से बोलती है, मिल्क नहीं पिएगा तो क्या पिएगा? No, that is the industry created that myth. So without milk there is no food. Yes. So forget about the baby. बच्चा को भूल जाओ. हर आदमी पी रहा है ना दूध. Yes. हर आदमी दूध रहा है, खाना रहा है. पनीर नहीं तो बहुत बुरा लगता है लोगों को. नॉर्थ में पनीर तो इतना टन खा रहे हैं आप लोग. Steroids. You are eating concentrated steroids. बस इतना ही. That's why people are addicted, because these are all drugged. So we start getting addicted to these things. This industry. That's what the industry wants. तो इंडस्ट्री को वही चाहिए ना. आप बिल्कुल इसके लिए बार-बार आ जाना है. And that's what they are doing without your knowledge. So ये सब आपको गमन में रहना चाहिए. बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया जाता है आपको, दूध अच्छा है, लस्सी अच्छी है, अंडा अच्छा है, अंडा अच्छा है, तो बार इसलिए बताया जाता है. संडे या मंडे खाओ अंडा. सचिन तेंदुलकर आ जाता है. Someone else will come. अमिताभ बच्चन आ जाता है, सलमान खान आ जाता है. All these fellows are being propped up as their agents. सोचने वाली बात ये है डॉक्टर खादर वली, सब लोगों के लिए, कभी वेजिटेबल्स की ऐसी ऐड आई है टीवी के ऊपर? जो चीज अच्छी है उसकी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, लोग उसको खाएंगे. वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, उनकी तो ऐड कभी नहीं आती है टीवी के ऊपर. ये वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल खाइए, ये आपका इस तरह का फ्रूट है, ये फ्रूट खाइए. उस तरह की ऐड कभी नहीं आती है. आजकल एंटी चल रहा है. वो वेजिटेबल्स अच्छा नहीं है, उसके पेस्टिसाइड्स है, तो ये नहीं खाना है, ऐसा ही बोल रहे हैं कुछ लोग एड्स में. सो वो तो बहुत बुरा हो रहा है. सो वी कैन क्लीन वेजिटेबल्स. ए टैमरिंड जूस है ना, उंगली और लेमन जूस में यू कैन कीप फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट ये उंगली का पानी या लेमन जूस में रखने के बाद पानी से धोने से ये सारा पेस्टिसाइड्स, पोलर केमिकल्स 50 to 90% चल जाता है. राइट. सो सब लोग ऑर्गेनिक फूड खाने को बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी तो ऑर्गेनिक फूड्स नहीं मिल रहा है. वेजिटेबल्स खास करके हम उसको धो के ये इमली का पानी से या लेमन वाटर, you just soak a liter of you take 1 lemon, squeeze it in 1 liter of water, put your vegetables and greens, then 10 minutes later take it out, clean it with fresh water and use for your cooking. And साउथ में तो इमली मिलता है, tamarind, so you take 10 grams. सब जगह मिलने लग गया है. Yes. So that is one very good way of cleaning your vegetables and greens. There is nothing better than eating different kinds of vegetables and greens along with your grains. So a khamir se you can actually drink khamir as well as eat salad like what do you call cucumber or carrot, सब खा सकते. तो हमारे कुछ लोग अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस को एक एक करके लेता हूँ डॉक्टर खादर वली. तो पहला जो क्वेश्चन ये है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए कौन सा खमीर अच्छा और कैसे लेना चाहिए? If complications are not yet there, अभी तो डायबिटीज है आपके पास, मधुमेह रोग है, अभी आपको न्यूरोपैथी नहीं गया है, डायलिसिस के पास नहीं गया है. See all these side effects of having diabetes slowly results in neuropathy, retinopathy and everything. Retinopathy है, सब
कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं पैदा हुआ है। आप ये 5 दाना को एक एक दाना 2-2 दिन, एक बार खमीर पी सकते हैं, 1 लोटा खमीर पी के आप पराठा बन सकते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी फुल्का सब कुछ बना के खा सकते हैं। स्पेशली 5 दाना को जरा पालक है ना आपके पास, ग्राइंड करके ये आटा में मिक्स करके भिगो के के बाद आपको बहुत अच्छा फुल्का बन सकता है, बहुत अच्छा चपाती बन सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो और यू कैन यूज लिटिल लेंटिल्स, ये उड़द दाल है, चना दाल है, 5% उड़द दाल का फ्लोर ऐड करके मिलेट में आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। ऐसा तो हमारा 5 दाने में प्रोटीन भी है, अच्छी तरह है, स्पेशली फॉक्सटेल में का 11% है, उड़द दाल में 10% है। So there is no dearth for any nutrient if you eat these 5 grains. Everything you get, absolutely complete food this is. So इसके अलावा आपको प्रोटीन जरा ज्यादा चाहिए तो उड़द दाल खा सकते हैं, मूंग दाल खा सकते हैं, या चना दाल भी खा सकते हैं। हम तो डोसा बनता है ना, टमाटा और चना दाल और फॉक्सटेल मिलेट मिक्स करके इंस्टेंट डोसा बन सकता है। सो बहुत सारा किचन में आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसके बारे में देर आर 2-3 किचन यूट्यूब किचन्स है, बायोफिलियंस, there is one. You go to YouTube and you add biofilians, you get whole series of cooking with millets and Millet Magic. There is another channel. So these 2 channels you can learn Millet all Magic. Yes, recipes, and kids will love the food that you make with this. So ये 5 दाने के आप हर रोज हर हफ्ते इस्तेमाल करने से within 6 months to 2 years you don't need to tell me your diseases, everything will disappear. ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जो दर्शक है, दोस्त है, पूछना चाह रहे हैं, वो 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या हम 5 को इकट्ठा खा सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है, इनका कोई साइड इफेक्ट भी है? एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट। भिगो के खाना पकाने से कोई साइड इफेक्ट किसको भी नहीं होता है। If at all something happens, it happens because you want to eat right. That's all, because you are used to it. You don't like this. Initially that can happen, but 6 weeks आप पहले खमीर से शुरू करो, स्लोली रोटी बना के खाओ, और हमारा साउथ में तो मुद्दा बोलता है, संगटी, वैसा भी बन सकता है, इडली बन सकता है, डोसा बन सकता है। धीरे धीरे से आप 3 बार ये आटा व्हीट खा रहे हैं, पहले शुरू करो 1 बार पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता 2 बार खाओ, तीसरा हफ्ता 3 बार, like that. If not in 3 weeks, in 3 months you shift from what you are eating to these 5 grains without any problem. You will be all right. And one important notice is भिगोना जरूरी है, सोकिंग बहुत जरूरी है। आजकल का ये मॉडर्न कुकिंग, एवरीथिंग इज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, एवरीथिंग यू हैव टू सोक। वो दाल भी सोक करने के बाद you throw away the water so that you don't have gastric problem. अभी तो क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में डाल के पुस करके वही खा रहा है, वो फाइटिक एसिड, everything is going in and you have lot of problems in your body. So खाने का तरीका, खाना पकाने का तरीका 2 ही बहुत important है, बहुत important है। So you should know what to cook, how to cook. ये बहुत जरूरी है, हमको पहचानना है। तो इसी के लिए हम हमारा एल्डर्स के पास जाना है। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, कैसे बनाना है, कैसे आटा छूना है, how to mix, and you have to actually rest the flour 2-3 hours after. Now you just mix the atta, make chapati, because they're all chemicals. It is easy for you, but then the right materials need soaking, resting. Some people put it in पानी का बर्तन में डाल के, some require heating, so they put near the stove. So all these techniques हमको सीखना है फिर और एक बार। So ये सब ये YouTube चैनल में सिखा रहे हैं, please watch this YouTube channel.
इवन पालक भी है, उसको काट के थोड़ी देर रखना चाहिए ताकि उसका Yes, भी जो कंटेंट, उसका absolutely. जो न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। जो बढ़ भी जाती सब्जी है है. उसको थोड़ी So, काट के रखते हैं। or you take garlic. Garlic, you have to just keep it after crushing it for an hour. Then the real good chemicals that help you will be released. But हम क्या कहते हैं, just put the garlic and then start eating. That's not the right. Or make garlic powder in plastic dabba. After 6 months, you start spraying. That's bogus things. No, these are the wonderful techniques are there. And haldi, when to use, when not to use. All these things have been taught to us by our elders. हमको Exactly. सीखना है फिर एक बार. जो सूप हल्दी है वो इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छी है, जो अपनी फ्रेश हल्दी है वो अलग ढंग से यूज होती है। दोनों के Yes. अलग अलग काम है। ये हमारे हाँ, एल्डर्स काम. को पता था, लेकिन हमें पता. पता नहीं है। Because we have stopped तो listening to them. We start respecting their knowledge. We started depending upon TV. We started depending upon these advertisement and channels, advertisement, and all these guys who have an agenda. They started teaching us different things. And now with this smartphone, we are still in big danger. exactly, totally agree with you. Yes. And जो next question है वो ये आ रहा है, from where we can get these seeds? तो हमें seeds मिलेंगे कहाँ से? Seeds तो आपको हम दे सकते हैं. No problem. Right. Yeah. हमारे पास कर्नाटका में पिछला 15 साल से हम करके गवर्नमेंट भी अभी तो रिकॉग्नाइज किया है. गवर्नमेंट बॉडीज आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स. आपको हमारे पास से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको 500 किलोस 1 टन भी हम रवाना कर सकते हैं. पहला वी हैव प्लानिंग, वी कैन गिव यू, नो प्रॉब्लम. तो कैसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपको मैं एक नंबर देता हूँ, ये वेबिनार के बाद एक नंबर देता हूँ. So we will share with all the friends Yes. that Yes. this is the number. Yes. Right. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आपने एक बार आंसर दे दिया है. कैन पीसीओडी कैन बी ट्रीटेड विद द मिलेट्स? यस, एब्सोल्युटली. प्रोटोकॉल्स भी लिखा हुआ है पुस्तक में. पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस, नर्व डिसऑर्डर्स, ब्लड कैंसर, एक 20 कैंसर्स का टेबल लगा दिया है हम. ओके. आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड पुस्तक किताब हम भेज देंगे अभी ये वेबिनार के बाद. आप तुम्हारा वेबसाइट में, फेसबुक में लगा सकते हैं. फ्री है ये, पीडीएफ सब लोग को फ्री है. एक क्वेश्चन आया है रेटिनोपैथी के बारे में पूछिए, लेकिन एक क्वेश्चन क्लियर नहीं. अब क्या पूछना चाहते हैं? कैन यू टाइप इट अगेन दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन सो दैट वी कैन आस्क फ्रॉम खादर वली सर. Yeah, I understand. See, from diabetes you have retinopathy, neuropathy, kidney problem. Every complication is there. Complication is there. So आपको वो प्रोटोकॉल का लिस्ट में जाके आपका प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम डायबिटीज से हुआ है या कुछ और कारण से हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप आई प्रॉब्लम्स का प्रोटोकॉल खोज के फॉलो करना है, बस इतना ही. और आपको डायलिसिस का प्रॉब्लम हुआ है, सो वो डायलिसिस प्रोटोकॉल को, डायबिटीज भी होता है, सो डायबिटीज भी चल जाता है वो प्रोटोकॉल आप फॉलो करने से, इस्तेमाल करने से. अच्छा, मालूम है ना? यू अंडरस्टैंड द थिंग. सो आपको न्यूरोपैथी है, डायबिटीज से हुआ है, तो कुछ और कारण से हो सकता है, लेकिन आप फॉलो करने का प्रोटोकॉल नर्वस डिसऑर्डर्स का, बस इतना है. राइट. डॉक्टर खादर वली, एक आपने जो क्वेश्चन जो लोगों को बताया है, जो लोगों के लिए बहुत नया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, वो मिल्क के ऊपर है. उसके बारे में हमने बात कर लिया. लेकिन जो नॉन वेज फूड है वो सालों से ह्यूमन रेस खाती आ रही है. बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अचानक हम इसके ऊपर जा रहे हैं. अचानक जो चीज खा रहे हैं वो हमारी टॉक्सिक कैसे हो सकती है? एक दो दृष्टिकोण है इसके. सब लोग ये मान चुका है नॉन वेजिटेरियन इज आवर फूड. आप इसके पीछे जाना है. बिफोर ह्यूमंस बिकेम मीट ईटर्स, वो क्या खाते थे? सो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज क्लियरली टेल अस. आई कैन गिव यू द रेफरेंस इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज. The fossils of the early human race harbored C4 grasses.
क्या है C4 grasses? Millets है. Okay. So if you go back to the tree, before the human learned to eat meat, he was eating, a gatherer tha, ek khata tha, ek khata, and he was all able to, what all he could eat was these grasses which are abundantly available. So before he became a non-vegetarian, he was a vegetarian. Right. Okay, so in between we have learnt all these hangamas. Abhi to hum drugs bhi le rahe hai. So a drug addict will say, oh, I have been taking like this. Abhi to daru pi rahe hai, dekha hai na corona. When they Line kitna lambi line लग गया. Yeah. So what I'm trying Economy to saviors. हाँ, so ए खाना भी ए मांसाहार भी ऐसा हम सीख लिया है. बट क्या है हम, हमारा डाइजेस्टिव कैनाल किसके लिए बनाया गया है वो आप देखना पड़ता है. और क्या क्या चीज हमारा पेट के अंदर, व्हाट आर द एंजाइम्स दैट आर अवेलेबल, व्हाट इज द परसेंटेज. सो ये सब एनालाइज करने से आपको पता चलता है हम omnivorous नहीं है, हम herbivorous है. Right. So this is the technical answer. And okay, we have eaten meat till now, we didn't know. अब तो पता चुका है हम कोरोना से, फ्लू से, all these problems of infectious diseases connected to meat eating, some meat or the other, है ना? Yes. So we have to understand the human race has to stop eating meat to be healthy. So these are the two ways of looking at things. So Right. most of us, the so-called scientists, are also stopping at that meat eating was there from time immemorial. No. If you have eaten meat for 10,000 years, before that 50,000 years, human beings have eaten only vegetarian and gathering these kinds of grains and C4 foods. Okay, these are the references available. I will give you. I understand that. That is the answer. So human race has to be vegetarian to be healthy, which is proven in the modern so-called researches also. In fact, in America, many scientists are slowly coming out and talking against the establishment. So the problem with all of us now is we have to speak against the establishment in establishing the real truth. And that is another problem. Yeah, that is the problem. Absolutely. And एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं. एक क्वेश्चन तो पूछा गया है, वो ये पूछ रहे हैं ये जो मिलेट्स है वो आपको कैसे मिलेंगे उनके शहर में? ये तो हमारा फ्यूचर काम है. सब जगह पे ये हम मिलवाना है, सब लोगों को सिखाना है, हमारा किसान ये उगाना है, ये सब काम हमारा सामने है. We have to keep trying, and groups like you have to encourage, let the farmers begin, you know, सब जगह पे हम ये काम शुरू करना है. तो साउथ में it is working out. We are all able to give all the thing. In fact, Telangana, Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, we are now slowly becoming very good and things. So we have begun the journey. अभी तो शुरू किया है. ये प्रस्थान पे मानव कुल अभी हाथ और कदम जोड़ के चलना है. Great. We are with you, and we are with respect that you're doing a wonderful job. No, it's not my job alone. All the people have to join. Everyone. Yes, that's why. Beginning. Yeah. So I आज बहुत सारे हमारे किसान जुड़े हुए हैं. So ये तो ये रास्ता निकाल दिया है. तो आप now सब मिलके कुल मिला के हम चलना है ये. Right. Yes. बात में. तो ये जो हमारे जो 5 मिनट्स है इनको सर few questions are there. If you are मिला के खाना अच्छा नहीं है. क्यों? आप कोडो मिलेट का फाइबर कम पड़ जाता है वो यू मिक्सिंग होने से. 5 दाना मिक्स करके आप तो ज्यादा नहीं खा सकते, इतना ही खा सकते हैं ना.
So in 100 grams, you have 20 grams of Right. Kodo, 20 of this, 20 grams of that. So the fiber content that cleans up your bone marrow is not enough. Your lungs is not enough. So दो दिन Right. Foxtail, 2 दिन Kodo, 2 दिन ये खाने से आपका ये different parts get cleaned up for a week. So the rotation में अलग अलग खाने से आपको स्वास्थ्य मिल You can use जाता that. है. कुल मिला के खाने से कुछ भी नहीं होता है. Of course, you can cure your diabetes. कुल मिला के खाने के भी, because fiber, glycemic index, but all other things will not happen. Right. Holistic health कारण नहीं मिलेगा हमें. और पता चल गया है ना, yes, yes. समझ में और आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं. यस, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलर्जिक एस्थमा के लिए और डिजेनरेटिव बोन चेंजेस के लिए कौन सा मिलेट अच्छा है, और साथ में एक क्वेश्चन साथ में ऐड कर देता हूँ. वो पूछ रहे हैं क्या हम इनको स्प्राउट कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वो हस्क चाहिए. स्प्राउट Right. करने के बाद भी वो हस्क हम नहीं खा सकते. वो तो बहुत लिग्निन्स बन जाता है. So it becomes very tough fiber for us to digest. So Okay. after removing the husk, we have to eat. If you remove the husk, you cannot sprout. But sprout Right. करके वो हस्क निकाल के खाने का बहुत मुश्किल होता है. So you can soak the grains, rice, and then eat. No problem. सब Right. मिल सकता है. एलर्जिक एस्थमा के लिए पूछ रहे एलर्जी हैं. अस्थमा तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. आप दूध पिलाने का पीने का शौक को छोड़ देना है. Within 6 weeks, the bodies themselves get well. And the problem with all of us is it's not just immune compromise. We have become hyperimmune. Autoimmune Okay. diseases are arising because of this continuous drinking of milk and eating the products. So to get that control, you have wonderful thing within Kodo and Little Millet. These two have wonderful control. So you start taking Khamir of Kodo and this, your autoimmune diseases, like lot of diseases are there. I think you know all of it. Like skin problems, nose problems, gande hota hai, and further more complicated autoimmune diseases be. And एक हमारा प्याज है ना, सांबार प्याज, onion, Right. not that big बड़ा वाला hybrid variety. Small छोटे onions, वाला. सांबार onions होता है छोटा वाला. वो डिकॉक्शन पीने से आपको 3 हफ्ते में बहुत सारा प्रॉब्लम्स कम होता है. और हल्दी इज द बेस्ट इम्यून Great. सिस्टम. ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स को बहुत, एंड बेसिल एंड गिलाई. गिलाई तो बहुत अच्छा पौधा है. गिलाई ये डिकॉक्शंस पीने से आपको इमीडिएट रिलीफ. विद इन 5 to 6 weeks you will get relief. And Kodo or Little Millet, the real immune system starts working. तो हमारे जो दोस्त है वो बढ़ रहे हैं, सभी ऑर्गन्स के ऊपर जा रहे हैं. नाउ समवन इज आस्किंग दैट, जो विक्रम जी हैं, ही इज आस्किंग दैट थायराइड के लिए क्या? हाँ, थायराइड के लिए वो हार्मोन इम्बैलेंस का है. लिटिल Ever. मिलेट इज द वंडरफुल ग्रेन because it controls all these endocrine systems. So you go to Little Millet 3 days. And oils, Niger seed oil and coconut oil. इस 3 ऑयल के बारे में नहीं बात किया है. नेक्स्ट सेशन में we will have in another 2-3 weeks one more session. We will concentrate Sure, on sir. Sure, sir. protein We will and very happy. oils. Yeah, we will Right. do that. So oils के बारे में हम बात नहीं किया है, बात करेंगे. So coconut oil और Niger seed oil 2-2 चम्मच बुल ड्रिवन ऑयल्स पीने से 3 हफ्ते से 3 मंथ में थायराइड प्रॉब्लम हम बाहर आ सकते हैं. राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं. वो सब प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ है. हम आपको राइट. बुक भेज देंगे, अभी किताब भेज देंगे सर, हम लोग जो हमारा ग्रुप बना हुआ है डॉक्टर्स का, और बाकी so much. जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ Your voice is breaking. sir, on behalf of a spiritual doctor for holistic health, sir, myself, Dr. Sandeep, thank you very much. It was really very informative and eye-opener for everyone. And I am sure that many of doctors and many friends who joined us today, उन्होंने आज को पहली बार सुना है. लेकिन आप कभी भी कहीं भी डॉक्टर खादर अली का नाम गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो बहुत बड़ा इनका फैन है. बहुत सारी रेसिप्स हैं, बहुत ज्यादा ग्रेन्स हैं. जो ये नॉलेज है
हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। वही मेरा ख्वाहिश है। हम इतना काम किया है, दूसरा बढ़ाने का काम आप लोगों का है। और सर इन द एंड आई वांट टू गिव यू टेस्टिमोनियल दैट हमने अपनी फैमिली के अंदर आपका जो लेक्चर था उसको सुन के, इससे पहले हमें नहीं पता था, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, डॉक्टर सौरभ है बिहार से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया जब मिलेट्स को, तो हमने छोटे छोटे जार बना लिए हैं, जार के ऊपर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लिख दिया है, उनको ऊपर हमने नाम लिख दिया है, एक जो मास्किंग टेप आती है, अभी हम उसको रेगुलर यूज करते हैं। उसका फायदा क्या हुआ, मिल्क तो हमने बच्चों के लिए खुद के लिए बिल्कुल बंद कर दिया, उसका फायदा ये हुआ, मेरी जो पत्नी थी उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी बहुत सालों से, उनका माइग्रेन एकदम गया। यस। और मेरा जो बहुत सारा बीमारियां, SLE, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्क्लेरोसिस, यहाँ पे सब पेशेंट्स आर रिपोर्टिंग दे आर 1000 times better, and they are walking, they are running, they were not able to lift their hands, now they are doing everything. ऐसा सबका रिपोर्ट्स आ रहा है। हम तो ये टेस्टिमोनियल्स का not very important, because I want everyone to be healthy. See, curing diseases is not important, not getting diseases. We want to produce healthy kids. What to do with that? How do we do that? All these are things that are bothering me, not curing, because curing diseases happens anyway. Just it happens. So we have to shift to this food style and food materials. All diseases will be wiped out. In fact, I can, with a lot of confidence, बहुत सारा दिमाग से बोल सकता हूँ मैं, we can wipe out all diseases if only we choose the right food. So health is in food. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पूरी साइंस है, साइंस जो होती है एविडेंस बेस्ड होती है, उसको यही बोलते हैं और इस चीज को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसा रिसर्च पेपर्स हैं जिसको पब्लिश किया गया है, जिसको No, the establishment doesn't want to publish. We are still in the early times. It will take at least another 10 years to produce evidence-based thing. It takes time. See, when you are going against the establishment, it's very difficult. Now, I will actually send you the reports of before and after. Right. No one wants to publish because the establishment wants with all due respect, diabetes is incurable. We have declared. So they will say, oh, yeah, let him eat rice, and so he has the disease. See, and when this establishment doesn't want to accept, even if you say, oh, it is anecdotal, it has no standing of evidence-based. And who will give evidence? Only if they publish. Exactly. When they publish, when big money is there, big research is there. So they will publish only if there is a product behind it. They can sell and then make more and more money. So हम तो बात उल्टा कर रहे हैं ना. So we don't want the disease to exist. We don't want the patients to come back to us. Not only come back, we don't want the disease itself to be there. Right. So we have एक खोज लिया है, हम एक रास्ता खोज लिया है, इससे सारा मानव जाति can be disease free and eating the right way and eating enough. There is no diet. So eat only this much, you weigh this, not like that. एक खा जाओ, पेट भर खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. And then please walk and do exercise. That's all that we are telling. बस इतना ही. डॉक्टर सौरभ कुछ कहना चाहते हैं सर? Yes. बहुत अच्छा है सर. हम लोग जो रिसर्च की बात कर रहे हैं कि रिसर्च हम लोग उसका भी कुछ तरीका निकालेंगे. yes, कि yes. हम अपनी बातों को एस्टैब्लिशमेंट के सामने कैसे लाएं. थोड़ी देर है. ये होता है, हो सकता है. It will take some time because establishment has to slowly yield to the common man, because when there are millions of people knowing this, and then say, imagine I don't go to a doctor, which I have not gone to a doctor, and the whole world doesn't have diabetes, then they will close their shop. Am I right? Yes. And that's what will happen if establishment keeps resisting the change, and that's what will happen. ऐसा ही हुआ ना. So ये स्मार्टफोन आ गया है, BSNL closed. Am I right?
And in another few years, TV will be closed. There will be no TV because everyone will have TV in their hands. ऐसा होता है ना? That's what will happen. So when we all become healthy, then doctors will have to close their shops, and that's it. I am so confident that it will happen in next 20 years or 25 years. चलो भाई, फिर मिलेंगे. सर एक छोटा सवाल और. We are a spiritual doctors group, so your words on meditation. ध्यान. ये तो I have been meditating for the last 45 years. So great. And it's a very personal thing, and I'm to very deeply connected to God's will. So without meditation, see, according to me, the birth of humans is to meditate and realize God's existence. It's not God. We are never going to see God or feel God. It is God's grace. Then we shall start meditation a little. Yes. We will have a meditation with Dr. Saurabh. And thank you, Dr. Khader Wali, for your valuable time. And it was very informative. And as you has given us an opportunity that after 3-4 weeks, we will again meet and discuss deeply on different other remedies and protocols. Over to Dr. Saurabh. दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से ध्यान का अभ्यासी हूं और 12 साल से मेडिटेशन कराता भी हूं. मुझे ध्यान बताने में, ध्यान करवाने में बहुत एक आनंद उठता है. जैसा अभी खादर वली सर ने बोला कि हमारे जन्म का पर्पस ही है गॉड को जानना, गॉड को जीना, गॉड के विल को समझना और उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से हम सुन सकते हैं और उसके अनुसार जीवन बिता सकते हैं. बाहर की दुनिया, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, फिजिकल लाइफ में अगर हम ज्यादा चले जाते हैं, जो कि दुनिया का ज्यादातर लोग चले गए, तो फिर वो एक स्वास्थ्य समस्या और अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम आती है. तो मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल, वेरी नेसेसरी. तो हम मेडिटेशन प्रैक्टिस पे चलेंगे. मेडिटेशन प्रैक्टिस में मैं ब्रेथ माइंडफुलनेस आनापानसति मेडिटेशन रिकमेंड करता हूं, कराता हूं. तो आज हम वही अभी करेंगे. मेडिटेशन तो वैसे एक स्थिति है जिसमें हम अपने भीतर जाते हैं. इसमें करने का जैसा कुछ तो है नहीं, लेकिन चूंकि बोलचाल की भाषा है तो बोलते हैं कि मेडिटेशन को में हम ज्यादा अच्छा शब्द है कि हम मेडिटेशन में बैठें, मेडिटेशन की अवस्था में, स्थिति में हम जाएं. तो मेडिटेशन में बैठने के लिए जो मुद्रा है, पोज है, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूं. वैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन मैं एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पर, नाड़ियों पर काम करता हूं. हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई हैं ऋषियों ने, संतों ने. उन 72,000 नाड़ियों में से कुछ नाड़ियों पर, एक्यूप्रेशर पर, एक्यूपंक्चर पे मैं निडल के माध्यम से या मसाज के माध्यम से काम करता हूं. तो हमारे बॉडी में हार्ट ऑर्गन बहुत महत्वपूर्ण है, हृदय. और हार्ट की जो नाड़ी है वो हमारे छोटी उंगली में आती है. हमारे हर एक फिंगर में कोई ना कोई नाड़ी आती है. तो ध्यान की मुद्रा में हम दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाकर गोद में रखेंगे और आराम से बैठ जाएंगे. क्लासिकल वे में तो स्पाइन को, रीढ़ को सीधा रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा शुरुआत में थोड़ी छूट दे देते हैं कि अगर आपका बैठने का अभ्यास उतना नहीं है तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हो. रीढ़ सीधे रहे तो ये अच्छा है. तो जो लोग बिना बैक सपोर्ट बैठ सकते हैं वो बिना बैक सपोर्ट बैठे. लेकिन अगर किसी को नहीं है आदत तो आप बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठे. पतंजलि योग सूत्र में है स्थिरम सुखम आसनम. हम रिलैक्स होकर, आराम होकर, स्थिर और सुखपूर्वक
ध्यान के आसन में बैठे। तो आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। आई विल प्ले ए म्यूजिक, लाइव म्यूजिक के साथ हम आंख बंद करके अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। संगीत जो है वो मन के एक माहौल बनाने के लिए होता है। संगीत के माध्यम से जो अच्छे साधक हैं वो बिना संगीत भी डायरेक्ट भी ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। वास्तव में तो सभी को वो होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन जो है बहुत चंचल है। माइंड को मंकी माइंड कहा गया है। तो बहुत मंकी माइंड को शांत करने के लिए म्यूजिक एक अच्छा टूल है। तो म्यूजिक के साथ हम अभी आंख बंद करके बैठेंगे। सभी लोग आंख कृपया बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद आराम से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर रखें। मेडिटेशन में रिलैक्सेशन का बहुत महत्व है। एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट हर्बर्ट बेंसन ने मेडिटेशन पे कई साल रिसर्च किया और उन्होंने मेडिटेशन पे जो किताब लिखी है उसका उन्होंने नाम दिया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो मेडिटेशन में हम अपने शरीर को, मन को रिलैक्स करते हैं। अपने आंखों को बंद रखते हुए अपने शरीर को महसूस करें। कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। पूरे शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ दें। विश्राम, आराम और प्राकृतिक श्वास पर हम ध्यान लगा सकते। शून्य करने का, किसी भी तरह से हम भीतर की शून्यता से, भीतर की दिव्यता से जुड़ जाएं। बात वो है आंख बंद करके आराम से, विश्राम से अपने भीतर से जुड़ें, अपने भीतर के दिव्यता से, भगवत्ता से। सांसों को महसूस हम पेट में, चेस्ट में और नाक में 3 जगह कर सकते हैं। किसी भी एक जगह पे, जहां भी आपको ठीक लगे। पेट में ध्यान देना रिलेटिवली इजियर है, बेटर है। जब श्वास अंदर आती है तो हमारा पेट नाभि के आसपास का हिस्सा, नाभि से नीचे का हिस्सा कितना मूव करता है, बहुत हल्का सा मूवमेंट है। बस उसी को हमें महसूस करना है। अपने तरफ से हमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है। प्राकृतिक अवस्था में हमें विश्राम करना है, अपने भीतर उतरना है। आंखें बंद रखें, सांसों के साथ जुड़ते जाएं। सांसों के अंदर आने को, बाहर जाने को फील करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Surrender to divine, surrender to God for entering in the divine consciousness. Relax and watch. Watch your breath, watch your body, watch yourself. सांसों को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें। मन में कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। हमें मन के पार जाना है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ध्यान में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो ये जो सोचने वाला मन है उसके पार जाना है। कोई प्रयास नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस एक सांसों के प्रति होश, अपने आप के प्रति अवेयरनेस। काइंडली कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद ही रखें। सांसों पर ध्यान का आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट ऑफ ब्रेथ माइंडफुलनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, आनापानसति ध्यान। सांसों के प्राकृतिक प्रवाह के साथ ध्यान। Meditating with the natural flow of breath. शांत,
हो जाएं, शून्य हो जाएं, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। शांत मन से अगर हम अपने स्वास्थ्य को देखें, शून्यता से अपने शरीर को और जीवन को देखें, तो आपको बहुत ये अपना जीवन सुंदर दिखाई देगा। Being healthy is easier if you are practitioner of meditation. और वैसे भी हेल्दी का हिंदी शब्द है स्वस्थ, स्वयं में स्थित। स्वस्थ शब्द को हम देखें तो स्वयं में स्थित, ध्यान से ही हम अपने आप में स्थित हो सकते हैं। लास्ट 1 मिनट आराम से चुपचाप बैठे रहें, महसूस करते रहें श्वासों को, अपने आप को, अपने भीतर की अवस्था को। बाहर से हमें भीतर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, बस, और तो कुछ नहीं। ध्यान भी आसान है। सुपर फूड मिलेट्स का खमीर, मिलेट का भोजन हम लेंगे तो स्वस्थ होना बहुत आसान है। वैसे ही आंख बंद करने का थोड़ा सा अभ्यास अगर हम कर लेंगे तो ध्यान भी आसान है। हर कोई व्यक्ति ध्यान आराम से लगा सकता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारे शरीर में, हमारे अन्नमय कोश में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें सबसे मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें 7 ऊर्जा केंद्र हैं। उन 7 ऊर्जा केंद्र में सबसे मुख्य है आज्ञा चक्र, थर्ड आई, भ्रुकुटी। अपनी भ्रुकुटी पर अपना अवेयरनेस, दोनों आंखों के बीच में, वहां पर, लेकिन ब्रेन में अंदर पीनियल ग्लैंड, उस रीजन में अवेयरनेस ले जाते हुए अपने जीवन में एक संकल्प लें, एक दिव्य संकल्प कि जो भी सुपर फूड मिलेट के बारे में मैंने सुना, जो भी ध्यान के बारे में सुना, इन सभी का मैं अपने जीवन में उपयोग करूंगा और अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त, ऊर्जावान बनाऊंगा। I shall meditate daily. I shall eat superfood millet, and I will live happy, healthy life. इस दिव्य संकल्प के साथ ध्यान से अब हम बहुत धीरे धीरे बाहर आएंगे। आराम से अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। Slowly put your palm on your eyes. आहिस्ते से हाथों को आंखों पर रखें। अपने चेहरे को प्यार करते हुए धीरे से आंखों को खोल लें। हम अपने आप से प्यार करना सीखें। कोई छोटा बच्चा होता था, हम उसको कितना प्यार करते हैं। अपने चेहरे को प्यार करें। ये जीवन दिव्य है, ये लाइफ बहुत पवित्र है। इसकी पवित्रता को, दिव्यता को हम रिकॉग्नाइज करें, रेस्पेक्ट करें और मस्त, खुश, आनंद के साथ जीवन जिएं, स्वस्थ जिएं। स्वस्थ होना बहुत आसान है। वी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ आपको अलग अलग मेडिकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के माध्यम से आपके सामने ये सारी बातें हम हर संडे 11 बजे लाते रहेंगे। आज जैसे हमने डॉक्टर खादर वली को सुना, जो कि एक अपने आप में एक हस्ती हैं। अगले संडे हम एक न्यूरोसर्जन है डॉक्टर दीपक रानाडे, उनसे कॉन्शियसनेस के बारे में सुनेंगे। चेतना, ध्यान में
हम अपनी चेतना के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं। हम मूल रूप से तो चेतना है, लेकिन ये मेडिकल साइंस चेतना के बारे में बात नहीं करता। शरीर और शरीर को भी मशीन की तरह देखता है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, और शरीर को भी मशीन की तरह ना देखें। तो इन सभी बातों पर बात करने के लिए हम न्यूरोसर्जन को, जो पिछले 12-15 सालों से कॉन्शसनेस पे काम कर रहे हैं, हम उनको बुलाएंगे। नेक्स्ट संडे 11 बजे फिर से आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के साथ आना है। नेक्स्ट टू डॉक्टर संदीप सर। बहुत अच्छा डॉक्टर सौरभ, आपने इतना अच्छा ध्यान करवाया, ध्यान के अंदर खो गए, पूरा ऐसे लग रहा है एकदम फ्रेश हो गए हैं। और जो आपने मेडिटेशन और मिरर्स का कनेक्शन जो बना दिया, शायद हम सभी लोग अपनी लाइफ में उतारेंगे सभी लोग। और मैं तो इसका एक उदाहरण हूँ, हमने इसको अपनी लाइफ में जोड़ लिया गया है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट संडे एक नए स्पिरिचुअल डॉक्टर के साथ में एट 11 AM। और हर संडे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हर संडे हम कुछ भी हो जाए, देश के किसी भी कोने में हो, हम आपके साथ मिलेंगे संडे को 11 बजे सुबह मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच।